Okay, class. So we are starting with the chapter living processes in living organisms. And here we are going to understand the basic part of how living organism and energy production is related. And the life, it is a part of the life process, the energy production, how we all function, and we all need some kind of energy to function our body. That's what we're going to understand. Okay. So I'll take you to what are we going to learn in this chapter and in this class today. And the first thing the topics we are going to learn here is in this chapter are, one second, where is the, sorry, yeah. Okay, okay. Just a second, guys. Just a second. I realized my work cursor. Okay, so energy production in living organism. So the one we are going to start, energy production in living organism, how living organism and their life processes work firstly, and how energy is related in that, and how do we need, why do we need energy, from where do we get energy, and how do we get energy from what we eat. Okay, I'm going to take several examples and then make it easier for everyone. And the last part of this chapter is cell division, and that we have is mitosis and meiosis. So these are the topics we are going to cover. Now, these three things might look different from what I've written here, like why do we need energy, from where do we get energy, because we'll talk about the respiratory system, because oxygen is important, oxygen is the part of the life. Okay, we'll talk about the energy currency, ATP. Okay, we'll talk about the ATP. Then we'll talk about the energy production in microorganism through anaerobic respiration. So there are different types of, like two types of respiratory system as well, respirations. Then we'll talk about energy from different food components, मतलब कि जो हम खाते हैं उससे किस टाइप का एनर्जी मिलता है और कैसे मिलता है, राइट? Just keep yourself muted, guys. Karan has not kept himself muted. Okay. So this is what we are going to learn in this chapter. So I hope the prime objective of the chapter is completely clear for everyone. Okay, I'm hoping that is completely clear for everyone. And that's why I said this chapter is going to be easy. This chapter is small and this chapter is going to be interesting. Okay, the reason for that is this. Now, let's go ahead and let's start with the today's class. First thing, okay, very first thing. So various organ system work continuously in our body. मतलब बहुत सारे, मतलब organs हमारी body में, like you know, different organ systems, like हमारा digestive system है, हमारा digestive system है, right? ठीक है, यहाँ पर intestine बना दिया मैंने, इसीलिए stomach बना दिया है. हमारा digestive system है, हमारा respiratory system है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है. बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. Excretory system hai, like we have excretory system, we have control system, like which controls the entire functions in our body, and different internal and organs and other organs we have. And जो हमारी बॉडी में ये जो different external and internal organs are performing functions independently, वो अपने सारे functions independently perform कर रहे हैं. ठीक है, and for all the coordination, इनके बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है. ओके, बट इनके बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है. जो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एवरीथिंग. नाउ दिस ओवरऑल सिस्टम, ओके, ये क्या होता है कि कैन यू जस्ट टेल मी, लाइक थिंक अबाउट इट फर्स्ट. आई सेड कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं. हाउ द एग्जांपल, फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव द एक्सटर्नल पार्ट एज नोज. For the respiratory system, we have the external part as nose. For the digestive system, we have the external part as mouth. For the digestive system, we have the external part as mouth, right? For the circulatory system, the heart, okay, the which transports the oxygen in the entire body, that we have what? Heart. For that, in that case, we have the heart. I'll write it here. Heart for that. Okay. Now, excretory system, we have the kidneys, right? Excretory system, we have the kidneys. For nervous system, we have the brain, which controls, and endocrine system, we have the pancreas. Okay, जहाँ पे हमारा ग्लूकोज वगैरह
ब्रेक होता है. सो दीज आर द एक्सटर्नल पार्ट्स, और जो हमारे ऑर्गन सिस्टम हो गया उनके इंटरनल के साथ मिलके पूरी बॉडी के फंक्शन करते हैं. ठीक है. नाउ कैन वी थिंक एंड let me know, just you all let me know, is it the same for all the living beings, all the living beings like animals? Do they also have the same organ system in their bodies? Do they also have the same organ system in their bodies? Quickly let me know in the chat box. And what are the similarities then? Let me hear from everyone. I ask, my question is, this overall system, is it same for all the living organisms? Akash is saying no. Let's hear from the rest. Let's hear from the rationale as well. Okay, let's see that. Now, as we say, all these system in all the animals same or not? Yes, definitely they are same. They also have the digestive system, they also have the respiratory system, they also have the circulatory system, they also have the excretory system, nervous system, and endocrine system. Okay, they also have the same kind of systems, organ system that we have in our body. More or less the actions and their they might look different, but more or less they also have all of these systems running in their body, which functions coordinately, which functions independently and with all the coordinate system, right? Yes. uh yeah. So this is all I would say, they all also have the same thing. Now, for for to function all these body, all the parts, functioning of all the parts, we need a continuous source of energy for this purpose. Okay, we need continuous source of energy. We need continuous source of energy. हमें क्या चाहिए? एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तभी हमारी बॉडी फंक्शन करती रह सकती है, राइट? फॉर दिस पर्पस. एंड सिमिलरली, लाइक द and similarly we need continuous source of energy, and for that purpose we take the nutrients in our body, and carbohydrates and fats and lipids, I will write lipids and fats are the main source of energy, are the main source of energy. And this is and are the main source of energy because the instant energy, the body, the energy we need in our body, it always all come from the carbohydrate and fats. How? The If you say ki proteins are the responsible for the growth of the body. Okay, just listen me carefully. Proteins are responsible for the growth of the body. Carbohydrates and fats are the responsible for the main source of the body. Okay, are responsible for the creating the energy for the body to function. Okay, now carbohydrates, like example like sugar, honey, cereals, दाल वगैरह जो होते हैं, इसमें फैट्स में क्या आता है? ऑयल, बटर, घी. यहाँ पर मैंने लिपिड ले रखा है क्योंकि लिपिड क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स. ओके, एंड these are the natural ones, naturally होते हैं ये. और फैट्स आर द पार्ट ऑफ, इज अ टाइप ऑफ लिपिड. फैट इज ए टाइप ऑफ लिपिड. ओके, मैं बता देता हूँ, फैट इज ए टाइप ऑफ लिपिड. ओके, लिपिड का ही टाइप होता है. लिपिड इज नथिंग बट द बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. लिपिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड विच क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. कैसे? कि जो हमारा, देखो ऐसे समझो कि फॉर सिंपल, कि जो घी वगैरह से जो प्योर मिलता है, जो नेचुरली मिल जाता है घी से, लाइक बटर से, ये लिपिड मिलता है हमें. एक्चुअल फैट क्या मिलता है हमें? लिपिड. और फैट क्या होता है? फैट इज नथिंग बट द ऑयल वी सी, द ऑयल, दैट इज अ फैट. तो फैट क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में बॉडी स्टोर होता है, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है तो वो फैट को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है बॉडी को फंक्शन करने के लिए. Okay, so that is the difference between the lipids and the fats. Is that, I hope that is clear. I will, if you want I can repeat that again. Lipid क्या है? लिपिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. क्या होता है लिपिड? अगेन लाइक इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई से, क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल्स है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं.
लाइक स्टेरॉइड आपने सुना है, लाइक यू नो these are the one of the type of the biomolecules, okay, like the lipids, okay. Fats are a type of the lipid. fats are the fats are the type of a lipid. fats क्या है, लिपिड के ही एक टाइप है, ठीक है। नाउ सिमिलरली जैसे ही जितना हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की इंपॉर्टेंस है, उतना ही ओके ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में आते कहां से, ये है जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स है हमारी बॉडी में बनते कहां पे हैं, कहां पे बनते, माइटोकॉन्ड्रिया पे। याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी, राइट, फैक्ट्री, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे आते हैं सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में। I hope you remember all of this. You know, mitochondria is nothing but the energy factor, right? The factory, right, of the body. So यहाँ पर हमारी बॉडी को सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इट गोज इन ऑल द सेल्स इन प्रेजेंट इन द बॉडी, ओके। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है, तो वो एनर्जी को, इन सबसे एनर्जी को निकालता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। Now, just food is not enough for the energy production. Just food is not enough for the energy production. What else is important? Can anyone guess and tell me what else is important? If I'm saying just food is not enough for the energy production, then what else is important? Just food is not enough for the energy production. तो और क्या जरूरत है हमें बॉडी में for the energy production? What else we require? Someone is saying water, Akash is saying water, okay. Water we can retain from the vegetables, like you know, some bodies get some of it from the food itself. What is else important? Oxygen is important. Oxygen is very important for the body to function, okay. So I would say here, it is not like that only food is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. And all these, okay. Ajit is saying meat, okay. Ajit, we can, meat is a part of food, bacha, okay. Now, so all these, like the foods and oxygens, they are transported, okay, they are transported in the cells, different cells in the body, okay, body के different cells parts में इनको transport किया जाता है by the circulatory system of the body, by the circulatory system of the body, जिसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस सारे फंक्शंस को। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा होता है, all the functions are controlled by the central nervous system. All the functions of body are controlled by nervous system, okay. control system जिसको बोलते हैं, control of body are controlled by nervous system, okay. नाउ तो बॉडी का, हमारे बॉडी में जो खाना है, जो एनर्जी बन के निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में, और जो हमने फैट की बात की, एनर्जी आती है, इसको क्या करता है कि बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का, इसको क्या करता है, बॉडी के हर एक सेल में, हर एक पार्ट्स में इसको पहुंचाने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, और ये इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है, जिसको नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ओके। सो दैट जो ईच लाइफ, ओके, हर, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, do I have taken the example of this? Just 1 second, guys. Okay, we have taken the example of this, okay. I'll get back. So that we can say कि हर एक, मतलब हर एक एनिमल और इवन द ह्यूमन, सबके जो मतलब कि प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन सबका सिमिलर ही है, ओके। ऑलमोस्ट दे हैव वन वे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी। मतलब कि हर एक बॉडी के पार्ट्स का फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है, तभी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी में, देन ओनली द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, राइट। So all the functions are required the energy to function in the body, and similarly they have one unique way of energy production in the body, okay. Now अब हमें एनर्जी मिलती कहां से, now we understood why do we need energy production, okay, why do we need एनर्जी प्रोडक्शन फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि टू फंक्शन आवर बॉडी सिस्टम। नाउ
Now we are going to learn where do we get energy from? From where do we get energy? Let's hear from some of you. From where do we get energy? किन चीजों से हमें एनर्जी मिलती है? Yes, let's see in the chat box. Where do we get energy from? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? I'm waiting for the responses here. Let's hear from some of you. Okay. Ajay Singh, environment. Okay. What else, Ajay? Anyone else? आकाश सिंह ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज कहां से आएगा आकाश? अजय सिंह फिजिकल एक्सरसाइजेस. May I repeat the question? I said where do we get energy from? From where do we get the energy to function our body? What do we eat? Basically, we get energy from what we eat. Yes, Akash, very good. Akash said food items. Very good. Okay, so we get energy from consuming fruits and vegetables. So I can simply write that humans and plants, other animals, okay, humans and other animals consume. क्या करते हैं हम? कंज्यूम करते हैं. क्या कंज्यूम करते हैं? द फ्रूट्स and vegetables. Consumes fruits and vegetables to get energy. Vegetables to get energy. Even the meat you can say. Okay. Now plants are autotrophs. They prepare their own food. Plants क्या करते हैं? खुद का ही खाना बनाते हैं. And how do they make? They make it with the help of photosynthesis process. They make it with the help of photosynthesis process. Okay. They make it with the help of photosynthesis process, where oxygen is released, CO2 is used, hydrogen, water is taken from the soil. Water is taken from the soil roots के through, जालम and phloem के through होता है. And then we eventually get, what we do, we get C6H12O6. This is the what product we get in photosynthesis, the plants get, and their food in the sense, they are food in the sense. Okay, so they are called autotrophs. So they खुद का खाना बनाते हैं, and they what they do, they utilize some of the food for themselves, where remaining is stored. तो क्या करते हैं? What do they do? प्लांट्स क्या करते हैं? कुछ फूड अपने लिए यूज कर लेते हैं, बाकी का स्टोर करते हैं. अब कैसे स्टोर करते हैं? लीव्स में स्टोर करते हैं. They store the food in leaves. They store the food in fruits में स्टोर कर सकते हैं. they store the food in stems. इसीलिए अगर जब जैसे लाइक अगर सन, जैसे सपोज करो जैसे सनलाइट नहीं है इन रेनी सीजन, दे डू नॉट हैव द सनलाइट, बट डेफिनेटली दे हैव द स्टोर्ड फूड इन देम इन देयर बॉडीज. सो प्लांट्स क्या करते हैं? दे कुछ खाना यूज कर लेते हैं, बाकी का जो फूड होता है दे स्टोर इन देयर डिफरेंट पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. रूट्स में भी दे स्टोर देयर रेस्ट ऑफ द फूड्स. ओके, नाउ हम क्या करते हैं? हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को खाते हैं और हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. वी ईट दीज प्लांट्स एंड वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, हम यही सारे प्लांट्स खा करके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals and fiber we get from them. So which food material do we consume to obtain these nutrients? Okay, now simple question, if I say carbohydrate, you सभी ने बचपन से बहुत कुछ सुना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट मिल रहा है, प्रोटीन चाहिए, मिल्क पियो तो प्रोटीन चाहिए, विटामिन खाओ, सब्जियां खाओ तो विटामिन चाहिए, मिनरल्स खाओ, फाइबर चाहिए खाओ. तो which food material do we consume to obtain these nutrients? One example I have taken here is already that if we need carbohydrate, and why do we need carbohydrate? For the energy. अभी अभी हमने पढ़ा कि we need carbohydrate for the energy, right? हमें कार्बोहाइड्रेट किस लिए चाहिए? For the energy. We need carbohydrate for the energy, right? और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? We get it from the vegetables, we get it from the fruits, we get it from the whole grains, seeds, beans. What else? और कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, let's take hear from some of you. और किन किन चीजों को खाने से we can get the carbohydrates? Yes guys, I'm looking at the chat box. Let's see. Ajit is saying milk, so we can, yes, we will write milk. Yes, हमें मिल्क से मिलता है.
हमें राइस से मिलता है डेफिनेटली, हमें शुगर से मिलता है, वेरी गुड आ जाए, हमें शुगर से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट? यस, वेयर एल्स वी गेट द कार्बोहाइड्रेट? यस गाइस, एनीवन? Yes, guys, I'm waiting for the responses here. Whereas we get the okay, someone is potatoes कह रहे हैं, कोई vegetables, कोई बोल रहा है pumpkin. Okay, so what else we can understand? How else we can understand this now? Okay, very good guys, amazing. So we get from carbohydrate from vegetables, already मैंने लिख लिया. Potatoes, very good, we get it from potatoes. हमें potatoes से carbohydrate मिलता है. हमें sweet potato is very good source of carbohydrate guys, जिसको आप सकला बोलते हो, जो आप एकादशी वगैरह में खाते हो. स्वीट पोटैटो इज वेरी गुड, कहते हैं ना, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमें स्वीट से मिलता है. स्वीट्स हम जो खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो उसमें मिलता है, बिकॉज उसमें शुगर भी होता है. इसके लिए सेलेल से मिल जाता है. केन, शुगर केन से मिलता है हमें. शुगर केन खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बिकॉज उसमें भी शुगर है. हनी खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बिकॉज उसमें भी शुगर है. तो फ्रूट से. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ व्हाट? energy. These are the different sources of energy. Now where do we get, what else we get? Okay, बनाना से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड. यस, योगर्ट हो गया, बनाना हो गया. बनाना से गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम ज्यादा मिलता है उस बनाना से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फॉर दिस. ओके, नाउ हाउ डू वी, वेयर डू वी गेट फैट्स एंड लिपिड्स? ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट तो समझ लिया. लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डू वी गेट फैट्स एंड लिपिड्स. हमें फैट्स और लिपिड्स कहां से मिलेगा? लिपिड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट, मतलब एनर्जी है. फैट इज अ पार्ट ऑफ द लिपिड. आपने लिपिड का नाम पहले कभी नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है लिपिड क्या है समझने में, बट ऐसे ही समझ लो कि घी वगैरह से जो मेन जो हमारा फैट निकल के आता है, दैट इज द लिपिड. और फैट इज अ पार्ट ऑफ लिपिड. ऑयली जो हमें दिखता है, जो हमारी स्किन में होता है, फैट जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फैट. उसको बोलते हैं हम फैट. लेकिन लिपिड क्या इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट. ओके, जो बॉडी को रिक्वायर होता है फॉर द, सो समवन इज सेइंग फास्ट फूड से मिलता है. ओके, so we get fat and lipid from the oil, we get it from ghee, very good source of ghee, butter. So these are the one part of like the meat you can say. So these are some examples of fats and lipids जिनसे हमें फैट्स और लिपिड मिल सकता है. आजकल मैं एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे मिल्क होता है. मिल्क में क्या होता है? फैट होता है, राइट? मिल्क में होता है फैट, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है? हाइड्रोनाइज्ड किया जाता है, हाइड्रोजिनाइड का किया जाता है, उसको पॉस्चराइज किया जाता है, जिसके उसके फैट को कम किया जा सके. उसके फैट को कम करने के लिए उसमें प्रोसेसिंग की जाती है मिल्क में, राइट? ओके, नाउ another, the next part is where do we get protein from? हमें प्रोटीन कहां से मिलता है? where do we get proteins from? हमें प्रोटीन्स कहां से मिलता है? yes guys, where do we get proteins from? let's hear from some of you. Somebody saying fruit, mutton. Okay, सो बेसिकली मेनली इसीलिए कहा जाता है घर में दाल पियो, दाल. बिकॉज जो दाल होती है आपकी, जो दाल होती है ना, पल्सेस जिसको बोलते हो, पल्सेस, दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ओके, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स. ओके, प्रोटीन का ये रिच सोर्सेस होते हैं, दाल प्रोटीन का, पल्सेस रिच सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के. ठीक है, मिल्क से प्रोटीन बहुत मिलता है, इसलिए कहते हैं सोने के पहले दूध पी लो. मीट से प्रोटीन मिलता है. वी गेट एग्स से प्रोटीन मिलता है. एग्स में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, द व्हाइट पार्ट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स होता है. और जो येलो पार्ट होता है, येलो पार्ट, एंड दैट इज अ फैट पार्ट, उसमें क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. फैट के लिए होता है वो. क्या किसके लिए होता है? फैट के लिए. तो अगर येलो पार्ट खाओगे तो फैट बढ़ेगा. इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लाइक द पीपल हु गेट मसल्स, after some time they stop eating the yellow part, they remove the yellow part, वो remove करके खाते हैं, because उसमें फैट होता है. they don't need much fat in their body. Okay, and the last but not the least, where do we get vitamins and minerals? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, vitamins and minerals कहां से मिलते हैं हमें?
जो हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए। बोलते हैं हमें विटामिन्स की कमी है। बेसिक विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वेरी गुड आकाश, वी गेट देम फ्रॉम वेजिटेबल्स। हरी सब्जियां खाने से विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ओके, वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट्स खाने से विटामिन्स एंड मिनरल्स सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें, सबसे ज्यादा। दैट्स व्हाई these are also have the equal importance in our healthy diet. Okay. Okay, perfect. Good to hear from all your responses, guys. This is great. Total grain product. Okay. Okay, Tanisha. Okay, perfect. Let's go ahead. And now, good to know that each gram of carbohydrate gives us 4 kilocalories energy. हमने पढ़ा एनर्जी की एनर्जीज एसआई यूनिट इज कैलोरी, हमने पढ़ा था जूल होती है, और जूल का जो ऐसा यूनिट होता है, जूल किस में लिख सकते हैं? कैलोरीज, याद है? तो हम कैलोरीज को, हम जो फूड से एनर्जी मिलती है वो जूल में हम कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज जूल होती है वो बहुत ज्यादा होता है, सो वी कन्वर्ट देम फ्रॉम द कैलोरीज, वी गेट देम फ्रॉम द कैलोरीज गाइस। ओके, तो कैलोरीज में तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है? तो मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन सुगर, हनी, cereals, स्वीट मीट। गाइस someone is unmuted. Okay, so proteins, sweet potatoes, vegetables, these are the good sources of carbohydrates. So I hope we till now you are getting this clear. Okay, so I just said कि carbohydrate कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, फ्रूट से मिल जाता है, जैगरी से मिलेगा, केन सुगर से, वेजिटेबल। बिकॉज अगर मैं बोलूं okay, I'm going to take the example for that. Okay, I'm going to take the example for that. So I hope this is clear. Now imagine कि many players are seen consuming some food stuff during the break of the game. बहुत सारे प्लेयर्स को आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, ड्यूरिंग द, जब उन्हें ब्रेक टाइम मिलता है तो दे ईट समथिंग, दे ड्रिंक समथिंग। ओके, दे मोस्टली द मोस्ट ऑफ द टाइम दे ड्रिंक समथिंग। And why the players consume these food stuffs? Why do they need to consume these food stuffs during the matches? Let's hear from some of you कि उन्हें क्यों जरूरत है फूड स्टफ्स को कंज्यूम करने की ड्यूरिंग द मैच? व्हाई डू दे नीड दैट? Ajay Singh, glucose. Okay. Rakesh Singh, to hydrate. Yes, they drink water. Very good. Akash is saying to gain energy fast. Very good. That is a good point. Fast energy. Okay. Lakshmi saying for stamina. That's great. What else, guys? Ajit is saying they will get glucose and will get energy to play. Very good. To be energetic. Ajay saying to be energetic, to get energy faster. Very good, Pooja. Okay, I think whatever you all are saying, that is completely correct. Very good responses, guys. Amazing. Okay, so why do they need? Because क्या होता है, when we perform physical activities, जब हम physical activities करते हैं तो हमारी body में क्या होता है? During the physical activities we lose water and salt content from our body. हमारी बॉडी में salt and water content कम हो जाता है। And when we take the energy drinks, what do? We take energy drink. Okay, what do? We take energy drink. एनर्जी ड्रिंक पीने से क्या होता है, उसमें जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन, मतलब वाटर की कमी पूरी होती है, सॉल्ट की कमी पूरी होती है, और ग्लूकोज मिलता है हमारी बॉडी को। यस, वाटर कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ द स्वेट। यस, स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर निकल जाता है, सॉल्ट निकल जाता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी टायर्ड, वी फील टायर्ड। व्हाट डू वी फील? हमें टायर्ड, वी फील टायर्ड। एंड टू ओवरकम द टायर्डनेस, अवॉइड करने के लिए वी नीड द एनर्जी ड्रिंक। और हम क्या करते हैं? एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। सो आई हैव रिटन हियर, ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज द बॉडी लूजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, ड्यू टू दिस दे फील टायर्ड, and we need an instant energy, and so they consume energy drink which contains water, salt, glucose. Sugar khana is a very good food to get instant energy. जैसे आपको अगर चक्कर आ रहे हैं, आपको वीक फील हो रहा है, तो you just eat chocolate. You will not feel in very less time you will feel energetic. जैसे आप कंज्यूम करोगे तो एनर्जी आपको आ जाएगा. So that's why the players consume something during the break time.
And so what we have learned, for energy production, carbohydrates and fats are very important. For the energy production in nutrients, carbohydrate and fats are very important. And in carbohydrate, sugar, honey, cereals, oil, butter, ghee, for energy production. If I just talk about for energy production, and for body growth, that is a different part, that we need proteins. But definitely for energy production, our body requires carbohydrate and fats. So sugar also lead to sleep. Sugar is overweight thing, so that leads to ultimately sleep. You can say that sugar is not that good also, because sugar increases the fat in the body, the weight increases. Okay, so that is not good also. Yes. And we also learned that mitochondria helps in energy production in our body, and that is transported to all the cells present in our body. Okay, so mitochondria is present in the cells, and that produces the energy, and that is transported to all the entire cells in the body, all the body parts, through the circulatory system, that is controlled by the control system. And similarly, oxygen has equal importance in our energy production. Oxygen is equal important in our energy production. And now we move towards to understand how respiratory system takes place, and how oxygen helps in production of the energy. So we move towards how nutrients and oxygen together produce energy. How do they together produce energy? So the topic is living organism and energy production. So basically we are done till here. And in the next class, one second, in the next class we are going to learn respiratory system till here. Okay, so